students, welcome to IIE. In this video we are going to discuss about a numerical on control system. So let us look at the numerical. So यहाँ पे numerical क्या है कि derivative feedback is employed in the control system shown in the figure. तो यहाँ पे देख सकते हैं एक derivative feedback यहाँ पे given है. So to improve क्यों connection है? To improve the damping. मतलब ये जो टोटल सिस्टम है, टोटल सिस्टम का डैम्पिंग को इंप्रूव करने के लिए they have attached a derivative feedback and this derivative feedback is this because यहाँ पे s मल्टीप्लाई है, देखिए ये derivative feedback है. Now if the required damping factor is 0.5, मतलब आपका जो damping factor required है और damping factor को हम लोग क्या बोलते हैं? It is denoted by zeta. So if the zeta value required is 0.5, then find the value of this kd. ये वाले kd कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? नाउ आपको क्या देखना है कि यहाँ पे आपका kd वैल्यू आपको निकालना है और गिवन क्या है कि रिक्वायर्ड आपका डैम्पिंग फैक्टर क्या है. तो उसके लिए पहला चीज ये जो मेरा सिस्टम गिवन है, दिस इज अ क्लोज्ड लूप सिस्टम, यू कैन सी. सो इन दिस क्लोज्ड लूप सिस्टम if we want to find the open loop transfer function, so what is the open loop transfer function? Open loop transfer function का मतलब क्या होगा कि यहां से लेकर ये वाले सेक्शन मेरा open loop transfer function होगा. So what will be the open loop transfer function? So if I want to write the open loop transfer function, so the open loop transfer function can be written as, you know that gs into hs. This is the open loop transfer function. So in this open system what will be the open loop transfer function? यहाँ पे 100 है, उसके साथ ये फीडबैक पे है, तो ये वाले सेक्शन का मेरा इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन क्या होंगे? 1 by s plus 4s plus 1, उसके साथ फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक. That means we can write it as 1 by s into 4s plus 1 divided by 1 plus 1 by s into 4s plus 1, उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे मेरा kd into s. So this part is the equivalent transfer function of this part, ये वाले part. Now इसके साथ ये cascading पे है, तो इसको cascading होना से मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. Now let us simplify this part. If you simplify this part, it will come out to be, यहाँ का डिनोमिनेटर पे देखिए यहाँ पे एलसीएम है, यहाँ पे एलसीएम है, तो दोनों एलसीएम कट आउट हो जाएंगे. सो दोनों एलसीएम कट आउट हो जाएंगे तो ऊपर में मेरा 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे. सो दैट मींस s into 4s plus 1, उसके साथ kd into s आ जाएगा. सो दिस विल बी द पार्ट. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर. सो यहाँ पे 100 है और it will be 4 square, इसके साथ s, इसके साथ भी s, तो इस s को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 plus kd, तो 1 plus kd. So this is the open loop transfer function, मतलब gs into hs. So we have got the open loop transfer function of this सिस्टम. ये वाले सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मुझे यहाँ पे मिला. अब मैं क्या करूंगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डालूंगा. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब होता है 1 plus gs into hs equals to 0, and we know the value of gs into hs. Just put the value. तो यहाँ पे आ जाएंगे 100 डिवाइडेड बाय क्या है 4s square प्लस s into 1 plus kd. This equals to 0. Now if we LCM this, then it will be found as 4 square plus s into 1 plus kd plus 100 is equals to 0. Now we know that in a characteristic equation आप a square के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं रख सकते, तो just divide this equation using 4.
तो if I divide this total equation by 4, it will be a square s 1 plus kd divided by 4 plus 100 divided by 4, and it will be 25. So आपका जो इक्वेशन अभी आया that is a square plus s into 1 plus kd divided by 4 plus 25. So this is the equation that you have got right now. This is the characteristic equation of this system, and you can see this characteristic equation से आप क्या देख सकते हैं कि ये वाला characteristic equation आपका एक second order system है, which represent the second order system. अगर second order system है तो we know that for the second order system the characteristic equation looks like this: a square equals to 2 zeta omega n s plus omega n square. This is the traditional second order characteristic equation of a control system. Now you can see this is s. If we compare these two equation, let us compare these two equation. तो मेरा omega n square equals to 25, so that means omega n equals to 5 रेडियन पर सेकंड. ये वाले टर्म को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं omega n equals to 5. Now similarly we can also write this one as 1 plus kd divided by 4. 1 plus kd divided by 4 is equals to 2 zeta omega n, and you know the value of omega n, just put here. So आपको कौन सा वैल्यू चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए kd का. आपको बोला गया था find the value of kd, और required value of zeta is given as 0.5. So what will be the value of kd right now? So kd can be written as 4 into this, मतलब 8 zeta omega n, 4 into 2 मतलब 8 zeta omega n minus 1. So 8 here, zeta value is required value is 0.5, तो यहाँ पे 0.5 पुट कर दीजिए. ओमेगा n का वैल्यू कितना था? मैंने निकाला था 5. Just put the value 5 here and minus 1. So if you multiply this, so 8 into 0.5 मतलब आपका आ जाएगा 4 into 5 20, 20 minus 1 is equals to 19. So तो आपको क्या बोला गया था कि then find the value of kd. So kd का वैल्यू आपके पास कितना आया? kd is given as 19. So ये जो kd है, ये kd का वैल्यू आपका 19 है. यही आपको पूछा गया था. So this is, in this way you can find this value of kd, which is the coefficient of this differentiator. देखिए डेरिवेटिव फीडबैक डाला था मतलब डिफरेंशिएटर डाला था. So डेरिवेटिव फीडबैक का जो कोएफिशिएंट है kd, उसको हम लोग इस तरीके से सिंपली निकाल सकते हैं. There are different processes also of finding this kd value, but this is the easiest way by which we can find the value of kd. So this is all about the numerical. Thank you.